अब हर ओर होगा जश्न कामयाबी का शोर, क्योंकि टेक्स्ट बुक लेकर आया है अप टू 90% ऑफ वंस मोर। जी हाँ, इस 20, 21 और 22 अप्रैल को टेक्स्ट बुक लेकर आया है सभी सुपर कोचिंग जैसे एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग, इंजीनियरिंग, यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी पर अप टू 90% ऑफ एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो जनाब देर किस बात की, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस ऑफर का लाभ उठाइए और हम जल्द आएंगे आपको देने सिलेक्शन की मुबारकबाद। Hi, good evening everyone. This is Shefali Ma'am, and in this session we are going to continue our discussion on the previous year questions of computer networks and operating systems. And in this session we'll be discussing the questions which were asked in the year 2020. I'm sorry, आज थोड़ा सा हम late हो गए हैं because of some technical issue, but yeah, at least we have joined. Jaldi resolve हो गया issue. So thank you so much, Durga Prasad, for giving me the confirmation that the audio and the video is fine. आप daily sessions attend कर रहे हो, so you know that कि मेरा first question ये आएगा कि audio video ठीक है, क्योंकि अगर audio video में problem है तो obviously we won't be able to continue. Anyways, without wasting our time, let's move on to the first question because already today we are running late. Are you all ready for solving the questions? Yes. All right. So this is the first question from computer networks. कल कुछ request आई थी कि मैम computer networks से ज़्यादा questions लेना. So this is from computer networks. Write your answer in the chat section. So basically it is asking that in an IPv6 header, the traffic class field is similar to which field in the IPv4 header? कौन सी field के equivalent है? All right. Yes, A is the right answer. That is equivalent to the type of TOS field. TOS is nothing but that is type of service. Type of service field के equivalent है. Basically, what is the functionality of this field? TOS या फिर traffic class field क्या कहती है? It is used to specify the priority of the IP packet. Sometimes what happens is when there is a congestion in the network, then the packets with the lower priority are discarded. जब congestion बहुत ज़्यादा हो जाता है, to release the congestion, तो हमें कुछ packets को discard करना पड़ता है. तो in that case, lower priority packets will be discarded. So undoubtedly, the answer for this question is correct. Exactly 8-bit field होती है which is undefined, so we are not going into the much details of IPv6 header. Next question, this is also on the basis of the computer networks. Computer networks, and this question was also asked in 2020. Answer. Which of the following can be used when creating a pool of global addresses instead of net mask command? D. ब्लॉक साइज कौन सी कमांड होती है? नो मास्क और ब्लॉक साइज आपने सुना है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट? नो मास्क और ब्लॉक साइज जैसे हमारे पास कोई मेथड ही नहीं होते, तो सबसे पहले ऑप्शन सी और डी डिस्कार्ड होगा. तो वी आर लेफ्ट विद ओनली टू ऑप्शंस, ऋषि, ए एंड बी. ए, स्लैश नोटेशन इज बेसिकली यूज्ड फॉर द प्रीफिक्स कमांड. ए क्यों गलत है? स्लैश नोटेशन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल सम आईपी एड्रेसेस गिवन 124.15.16.148 स्लैश, अगर मैं यहाँ पे कर दूं /17, /17 का मतलब क्या? दिस 17 मीन्स 17 bits will be the network bits. ये किसके बिट्स हैं? ये नेटवर्क के बिट्स हैं, राइट? तो
This is saying that which can be used when creating a pool of global addresses instead of the netmask command. हमें netmask command नहीं चाहिए. So which is the last option? That is the prefix length. So correct answer for this question is it's option B, that is prefix length. मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रही हूँ सिर्फ 2-3 लोगों के ही रिप्लाईज आते हैं. व्हाट अबाउट द अदर्स? Basically B is true, prefix length is true because we can use it to match the longest prefix and then send the packet to longest matching prefix network. जो भी longest packet होगा that will be sent. So answer for this question is that is option B. Okay. C और D तो बिल्कुल ही गलत है. This is the next question. Ma'am, how many these types of weird questions comes in the exam from all the subjects which are uncommon to GATE pattern? See, there is no predefined structure. पहली चीज weird और difficult नाम की कोई चीज नहीं होती है. It all depends on your preparation level, your understanding level and किस level की आपकी preparation है. पहली चीज. गेट पैटर्न के अलावा गेट का एज सच फिक्स पैटर्न कुछ नहीं होता. अगर आपके पास जो सिलेबस गिवन है, इफ यू हैव थॉरोली प्रिपेयर्ड द सिलेबस, देन देयर इज नथिंग लाइक वियर्ड. कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, बट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस इजी कब हो जाते हैं? जब आपको कॉन्सेप्ट की थॉरो नॉलेज है. इसीलिए जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, आई हैव ऑलवेज गिवन यू एडवाइस कि बेटा जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हो, ऑलवेज आस्क व्हाई इट इज लाइक दिस एंड फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग. ओके, इफ यू नो द प्रॉपर रीजनिंग तो एनी हाउ आप डायरेक्ट क्वेश्चन हो या इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो इजीली हैंडल कर लोगे. हाँ, आप ये जरूर पूछ सकते थे कि कितने परसेंट क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस नहीं होते. मैंने इसका आइडिया आपको पहले ही दिया हुआ है. अप्रोक्सीमेटली 35 to 45 or 50% questions will be the previous year gate questions. बाकी questions different होंगे. Okay? अब कितने questions कौन से subject में से कितने gate के आएंगे, ऐसा कोई predefined structure नहीं है. It always depends on the examiner whether they are going to create the new questions. They are directly taking it from the gate papers. Sometimes they take the questions from UGC net also. ठीक है. तो अगर आपने थॉरोली एक बार सारा सिलेबस प्रिपेयर कर लिया तो आपको इसरो, डीआरडीओ, नेलेट साइंटिस्ट भी या कोई भी, अगर आप टीचिंग लाइन में इंटरेस्टेड हो, अगर आपके पास यूनिवर्सिटीज के पॉलिटेक्निक कॉलेज ये वो जितने भी पेपर निकलते हैं, यू जस्ट नीड टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स और आप कोई भी पेपर इजीली क्रैक कर सकते हो. शॉर्टकट्स कभी भी काम नहीं आते. एक बार लग के थॉरोली प्रिपरेशन कर लो. यू गेट माई पॉइंट? तो एक बार थॉरोली आपको सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे. ठीक है, तो अब वो आप देखो कि आपको कैसे प्रिपेयर करने. एक बार तो मेहनत लगेगी. ऑलराइट, तो वियर्ड और डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता. अगर आप मुझसे पूछोगे तो आई विल बी लाइक कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी क्वेश्चन वियर्ड नहीं है. बेसिकली डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हम किसे बोलते हैं? जब एक क्वेश्चन में दो या दो से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स मिक्स हो जाए, या फिर एक क्वेश्चन में दो डिफरेंट सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं और वन कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द अदर कॉन्सेप्ट, तो उसको हम बोलते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था. अगर एक ही टॉपिक के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उसमें वियर्ड नाम की कोई चीज नहीं. अब जैसे हमने IPv6 और IPv4 हेडर की बात की, अब अगर किसी ने IPv6 हेडर नहीं पढ़ा है तो उसके लिए वो क्वेश्चन वियर्ड हो गया. आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल. The very first question that we have discussed in today's session, that was related to the comparison of the field of IPv6 header and IPv4 header. अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ IPv4 header पढ़ के जाते हैं, IPv6 नहीं पढ़ के जाते. बिकॉज जनरली ये होता है कि जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं वो IPv4 header से आते हैं.
अगर आपने थॉरली प्रिपेयर किया तो जैसे आपने 10 सेकेंड्स में आंसर दे दिया तो आपके लिए वो क्वेश्चन बहुत इजी था, दैट वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फॉर यू, बट दोज हु हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर IPv6 उनके लिए वो क्वेश्चन वियर्ड हो गया। तो ये जो व्यू पॉइंट है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। तो थॉरली सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करो, आपको आंसर मिल जाएगा। एनीवेज, नेक्स्ट वन, दिस इज बेस्ड ऑन द डायरेक्ट मैप कैशे, number of bits for indexing the cache. So this is from कोआ equation आ गया, कोई बात नहीं, this is based on the memory। तो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मेमोरी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। What will be the answer for this question? B means 15 bits. Have you tried this question, दुर्गा प्रसाद? बाकी लोगों का क्या आंसर आ रहा है? What about others? A direct map cache of size, that means you are given with the cache memory size. Cache size is given as 32 KB and has block size is given as 32 bytes. So you can view this as this is the cache memory, this is of 32 KB। अगर आपको फॉर्मूलाज नहीं या कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो आपको एक कैशे मेमोरी का साइज गिवन है which is divided into the blocks and each block size is 32 bytes. So can we calculate the number of blocks? Number of cache blocks will be cache size divided by block size, that comes out to be 1K. Block size, yes, now your answer is correct, Durga Prasad. This is 32 KB upon 32 bytes, units ध्यान में रखने हैं। So this comes out to be 1K. 1K means 2 raised to power 10. So 2 raised to power 10 cache blocks are there. So in order to represent one block, यहाँ पे हमसे क्या पूछे, number of bits needed for indexing the cache, यानी कि आपको particularly cache को cache memory block को represent करना है, how many bits are required? अगर 2 raised to power 10 combinations है, so number of bits required, अगर 8 combinations को represent करना है, we need 3 bits. If we want to represent 16 combinations, 4 bits are required. For 32 combinations, 5 bits are sufficient. So number of bits are nothing but that is log base to 2 raised to power 10. That is the block size. That comes out to be 10 bits. आपसे कंप्लीट एड्रेस के बिट्स नहीं मांगे, आपने 5 बिट्स ऑफसेट के लिए बोली, डेफिनेटली 32 बिट एड्रेस है, बट टोटल 32 बिट में से इंडेक्स के लिए कितनी यूज हो रही है, दैट इज 10 बिट्स। दिस इज डायरेक्ट मैप कैशे। Okay, so 10 bits are required here, so 10 is the right answer for this question. Exactly, 5 bits offset के लिए हो जाएंगी because block size is 32 byte. This is going to return the offset bits. आपके पास index bits आ गई, बाकी की bits क्या हो जाएंगी, tag bits. Exactly. So anyhow, here the answer for this question was option C. Those who are following this session for the first time, guys, we have an official Telegram group, that is Shefali Ma'am test book. On this group, on daily basis, I'm sharing the PDF of all the YouTube sessions. So if you want to get this, you can join this Telegram group and the link is given in the description box. Towards the end of the session, I'll show you the link as well. Doubts and discussion solving is there. You can directly interact with me. Also, the quiz and polls will also be conducted in this group. Link description box mein, go and check it there. Yesterday also we had discussed one question similar to this, in which we were supposed to calculate the total seek time. In this question, it is not asking for the total seek time. Here it is asking for the total number of head movements. Point number 1. Point number 2, जो 2021 में question आया था, that was based on first come first serve, and this question is based on the algorithm that is shortest seek time first. So can you return the total number of head movements if the disk head is initially at 53?
कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ एल्गोरिथम चेंज हुए. Arrange them in the ascending order. Initially, the head is placed at 53. शॉर्टेस्ट सीक टाइम में, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में क्या करते हैं? शॉर्टेस्ट सीक टाइम मींस जो नियर बाय रिक्वेस्ट है दैट विल बी फुलफिल्ड फर्स्ट. अब 53 से 65 देखो कितने सिलेंडर्स आ रहे हैं बीच में? 12. 53 to 37, this is coming out to be 16. So obviously 12 is smaller. So 65 वाली request will be fulfilled first. After that, 65 से 37 is far away. 67 is closer. 67 से 98 distance is of 31 and 67 से 37 is 30. तो shortest seek time के according it will be going to 37 first. Then 14. Then next comes 98, 22, 24 and then finally 183. Right? अब cylinder movement आपको return करनी है. Just calculate it. 65 minus 53 is 12. 67 minus 65 is 2. 67 minus 37 is 30. 37 minus 14 is 3 and 2. Then is this is 84. I'm taking the difference. 98 minus 14, 84. In order to save our time, I'm writing it in this format. 24 and this is 2 and this is 59. So total number of head movements. किसी का आंसर आया अभी तक? I haven't got any response. So this will be 12 plus 2 plus 30 plus 23 plus 84 plus 24 plus 2 plus 59 and that comes out to be 236. That is nothing but it's option A. So correct answer for this question is it's option A. Okay, so this is the concept. This is the topic which was asked in 2021, 2020 as well. सिर्फ क्या चेंज हुआ? एक तो आपके पास सिलेंडर नंबर चेंज हुए. सेकेंड थिंग इज एल्गोरिथम चेंज हुआ. सो वी हैव टू रिवाइज ऑल द एल्गोरिथम्स thoroughly. Next one. Now this question is based on operating system. Answer. Quickly return the answer for this question. For this question, no calculation is required. Hurry up, guys. A, that is zombies. Yes, that's the right answer. Basically, zombies क्या होते हैं? Here it is saying that in an operating system, processes that are terminated but for some reason must have its task structure in the process table referred as. कुछ processes terminate होने के बाद भी they are into the system that is termed as zombies. ये क्यों exist करते हैं? Sometimes, for example, the child process has completed its execution. Even then, its status will be there in the system because it has to report to the parent about, it has to give the update to its parent about its status. So that is known as zombies. Okay.
तो zombies होते हैं जिनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है बट दे स्टिल हैव द एंट्री इन अ प्रोसेस because sometimes they have to give the status to the parent process. So zombies is the correct answer. Next one. Which table is used in MS-DOS for linked list allocation? Often processes are those for which there is no parent process. Okay. Often means जिसका कोई parent नहीं है. तो डायरेक्टली आप सिंपल बेसिक टर्म के साथ इसको रिलेट कर सकते हो. Next question, which table is used in MS-DOS for linked list allocation? Very good. That is FAT. This is nothing but full form of FAT is file allocation table. यहाँ पे क्या बोला है, हमें किसी प्रोसेस को कुछ मेमोरी एलोकेट करवानी है फॉर एलोकेशन पर्पस. TLB is translation look aside buffer that is going to represent the page number where this is stored. So translation look aside buffer is not used for linked list allocation. ये allocate नहीं कहता है, it just represents that where is that index or the page available. Page table always contains the information related to a page. It is not related to allocation process. FAT is file allocation table. Allocation से आप relate कर सकते हो. This can be the answer. Index table. Index table is usually containing the search key field and the pointer field just to indicate that the required search key is available at what page. Right? So index table is not used for allocation purpose. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ pointers होते हैं. So index table is not the suitable answer. So हमारे पास option और कोई बचती नहीं है. That is FAT. File allocation table. Next one. The physical location of a record is determined by a mathematical formula that transforms a key file into a record location. All right. So what is the answer? Very simple. कहाँ पे आप मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करते हो, मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करने के बाद क्या होता है, इट ट्रांसफॉर्म्स अ की इनटू अ रिकॉर्ड लोकेशन. की को ट्रांसलेट करते हैं इनटू सम लोकेशन. वेरी गुड दीपक, दैट इज ऑप्शन बी, हैश्ड फाइल. हैशिंग के केस में क्या होता है, वी यूज हैश फंक्शन ऑन द गिवन की, वी अप्लाई द हैश फंक्शन एंड ट्रांसफॉर्म्स एंड ट्रांसलेट इनटू one of the hash address. Hash address is nothing but that is the record location. तो यहाँ पे भी हमें ये बोला कि हम की को किस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मिंग इट टू अ record location. So undoubtedly the answer for this question is it's option B. Easy है. Do you think that these are the weird questions? Although ऐसी टर्म्स हम जब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं ऐसी डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हमने नहीं लिखी हुई अपने नोट्स में, बट स्टिल डू यू थिंक दीज आर द वियर्ड क्वेश्चंस? आप देख रहे हो कि हाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दीज क्वेश्चंस. तो ऑटोमेटिकली इफ यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट केयरफुली, अगर ऑप्शंस ध्यान से पढ़ते हो तो आपको अपने आप आंसर समझ में आता है. ऋषि, कोई वियर्ड क्वेश्चन लगा? तो वियर्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं. Ma'am, what is sequential file? Sequential file is like when you are getting the records one after the another. एक sequence में आप records को access कर पा रहे हो. All the elements are arranged, all the elements are sorted, and they are stored at the contiguous locations. So that is the sequential file, where one proper sequence is followed. Next question. Dash tells a firewall about how to reassemble a data stream that has been divided into packets. Read the statement carefully, read all the options given to you.
The number in the header's identification field. बच्चे फायरवॉल को बताने, राउटर पे नहीं, राउटर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. Read the given statement carefully. Not talking about the router dash tells a firewall. Firewall को कौन बता रहे? नेटवर्क होता तो डेफिनेटली इट वुड हैव बीन ऑप्शन बी, बट यहाँ पे नेटवर्क की या राउटर की बात नहीं हो रही है. डैश टेल्स अ फायरवॉल, फायरवॉल को बताना है, क्या बताना है? अबाउट हाउ टू रीअसेंबल अ डेटा स्ट्रीम that has been divided into the packets. Very good, Deepak. No, Durga Prasad. Its answer is it's option A. Source routing feature क्या करता है? It allows a sender, it source routing feature, नाम से क्या समझ में आ रहा है? सोर्स राउटिंग का फीचर क्या होगा? सोर्स राउटिंग मीन्स it is going to provide the partial or the complete information about the router, about the routing or through which, or the path through which all the packets are traveling. Exactly, it tells which route to take, यानी कि ये path determine कर रहे हैं कि कौन सा path follow करना है. Correct? So it tells about, or it allows the sender feature, allows the sender to determine, allows a sender of a packet to partially or completely determine the path. Partially or completely specify the path, or you can also call this as route, the packet, कौन सा route जो packets ने ली है, the packet takes through the network. तो इससे क्या होता है? After reassembly, after reassembling of the packets, the firewall can then filter the stream. So this is the functionality of the firewall. तो अब ये क्वेश्चन इजी होते हुए भी डिफिकल्ट हो जाता क्योंकि आपने जो फर्स्ट 4 वर्ड्स थे इन पे ज्यादा फोकस किया ही. एक और चीज हमेशा ध्यान में रखना, क्वेश्चन की लेंथ जितनी छोटी होगी ना उतना ट्रिकी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. क्वेश्चन जितना लेंथी होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, क्वेश्चन हैंडल करना उतना इजी होगा. बिकॉज जितना ट्रिकी होगा वहां पे कॉन्सेप्ट्स आपको खुद सोचने हैं, बट जब क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा होती है सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. ओके, नेक्स्ट वन. You are working with a network that is some address is given and would like to support 600 hosts per subnet. What subnet mask should you use? This is again the question on the basis of the computer network. Specifically, this is from the network layer. Network layer may be from IP addressing. So in this question, you have to use the concept of IP addressing.
C. Okay. All right. So first of all, can you tell me that what is this IP address belonging to? ये कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहा है? कैसे क्वेश्चन हैंडल करते हैं? जब भी आपके पास क्लासफुल एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट होता है, on the basis of the value of the first octet, we can determine the class. For example, this is 172.16.0.0. B, C. Yes. So this address belongs to class B. Okay. And in class B, we know that the network bits कितनी होंगी? 16. Host bits कितनी होंगी? 16. But this is saying that we are given that number of host per subnet. Subnet bits कहाँ से borrow होती हैं? Subnet bits means number of hosts are more in one network. So we are going to divide a large network into the small network. So these subnet bits are borrowed from host. Correct? अब कितने assign करवाने? We are given that the number of hosts पर सबनेट, एक सबनेट में कितने होस्ट हैं? 600 host. In order to represent 600 host, how many bits are required? With 9 bits, we can represent 512 combination. That means log base 2 600 and we'll be taking the seal value, that is giving you 10 bits. So 10 bits will be the host bits. Correct? So total 16 bits थी. Out of these 16 bits, 10 bits are used as the host bits in each subnet and 6 bits will be used as the subnet bits. Now just sign the values here. So first two octets को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है because anyhow those are the bits of the network. Network bits का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है. So network bits means all the bits. Mask में in mask network bits are always 1. In mask the network bits are all ones. यानी कि first octet में जितने भी ones हैं 5, 6, 7, 8, these will be ones. Second octet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, this is also ones. तो ये आपके पास हो गई 16 bits network की. Network bits. Next 6 bits will be used as the subnet bits. Subnet bits भी क्या होंगी? क्योंकि हमें mask find करना है, so subnet bits will be, these are the subnet bits. These will also be ones and all the, जब हम mask calculate करते हैं तो host bits 0 होते हैं, so these bits will be 0. कितनी आएंगी zeros? 10. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. These 10 bits are the host bits. इसको represent कर लो. This is coming out to be 255.255. This is 252.0. That is nothing but it's option C. काफी simple और straightforward question था on subnet mask. Clear? Supernet bits कहां से borrow होती हैं? Usually जब हम classful addressing की बात करते हैं, we have the network bits and the host bits. तो जब supernet की बात करते हैं, supernet means एक network में जितने हमें host assign करने हैं, we do not have the sufficient IDs available. तो क्या कहते हैं, छोटे छोटे networks को combine करके one supernet is created, right? So in case of supernetting, the supernet bits are borrowed from the network portion. Whereas subnetting हम यूज करते हैं because एक नेटवर्क में number of host, number of addresses ज्यादा हैं जो यूज नहीं हो रहे, वेस्ट हो रहे.
So that's why to divide the large network into the small network, we are going to borrow the bits from the host portion. Okay, so ये simple सा concept है subnetting and supernetting. Next question. 1 megabyte memory storage in form of bytes is equal to. This will be equal to. Very good. Yes, it will be option B. काफी straightforward question है. 1 MB means 1 M means 2 raised to power 20 bytes. 2 raised to power 20 bytes. This can also be written as 2 raised to power 10 into 2 bytes. 2 raised to power 10 is nothing but 1024 bytes. That is nothing but it's option B. Correct answer for this question is it's option B. So till this point, we have covered the questions from 2020. I guess आज वाले session में ज़्यादातर questions computer networks के ही थे, right? In the next session, we will be studying from the questions from 2019 का paper नहीं है, तो 2018 से start करेंगे and will be discussing the questions of 2018 and 17 on Monday. So this weekend we won't be having the marathon session. At least I'm not taking the session. I'm not sure about Himanshu sir. So guys, those who are new, you can join the Telegram group. आज वाली PDF में in another 5 minutes I'll share this PDF in this group. And apart from that, if you have any doubt, कोई भी आप point पे discussion चाहते हो, you can post that in the group because Saturday and Sunday there will be no class. Exactly. 2015 और 16 से NIC का एग्जाम हुआ है, इसलिए जो मैंने क्वेश्चंस करवाए ना आपको 2016 तक के करवाए हैं. 2022 से स्टार्ट होके हम 2016 तक गए हैं, तो यही मैंने आपको बोला था टॉपिक बाय टॉपिक हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे. Okay, you can directly interact with me. Quiz and poll is also there, will also be there in the group. So next session में we will be discussing the questions on computer networks and operating systems. ये CN और OS के questions खत्म होने वाले हैं. उसके बाद आपने मुझे बताया नहीं which subjects you want me to take first. Will be starting from 2018 followed by 2017 questions. Monday to Friday we are having 2 sessions per day. One at 5 PM. दोनों sessions completely free है. 5 PM on YouTube. And other session is at 9 PM on textbook platform. So that is the textbook masterclass. Textbook masterclass. Saturday and Sunday is for the marathon, but because of some reason this weekend I'll not be taking the marathon session, but will continue from next weekend. Okay. So anyone having any doubt till this point? Let me show you how you can access the link, how you can join the link. So this is the video that is currently going on. तो जैसे ही बेटा description में जाते हो ना आप यहाँ पे the very first link is for the master class. Expected exam date will be somewhere around July or August, not before that. उससे लेट हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता. इसलिए मैंने बताया था कि अगर आप थॉरोली प्रिपेयर करना चाहते हो, एक बार तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा. सो माय सजेशन इज 6 मंथ्स वाला सुपर कोचिंग ले लो. आपके सारे के सारे प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे एंड एवरी डैम सिंगल थिंग विल बी क्लियर. टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोर्शन कंप्लीटली. अपकमिंग क्लासेस का स्केड्यूल एंड दिस इज द स्केड्यूल फॉर द पास्ट क्लासेस. सो यू कैन गो थ्रू इट from the schedule. ये आप recorded sessions देख सकते हो. And second link is for the super coaching. If you want to join super coaching, yes, I know Deepak, you have already purchased. So those who want to purchase it, so I'm directly going to the pricing. Here we have 3 plans, 1 year, 6 months and 3 months plan. Currently sale is going on. तो इस सेल का बेनिफिट एक तो ये कि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्लस
आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है. लाइक इफ यू आर परचेजिंग द 6 months प्लान, तो आपके प्लान की वैलिडिटी 9 months की होगी. सेकेंड बेनिफिट इज जो टेक्स्ट बुक पास है, टेक्स्ट बुक पास का बेनिफिट क्या है, यू कैन एक्सेस एनी नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, कोई भी एग्जाम का कोई भी मॉक टेस्ट आप दे सकते हो विथ टेक्स्ट बुक पास. वैसे 1 year का लाइफ टाइम इज फॉर 500, बट अगर आपके पास सुपर कोचिंग है तो आपको टेक्स्ट बुक पास बिल्कुल फ्री में मिलता है, राइट? अभी आपने देखा 9 months के लिए यू हैव टू पे 3429. If I apply here the coupon code